हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लिखने वाले स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश का 4.4 रामानुजन उस चैप्टर के वर्बम्स एंड इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस एंड आंसर। तो चलिए देखते हैं अपने चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर। फर्स्ट है, डिस्कस ओरली इन योर क्लास इन व्हाट सब्जेक्ट इज नॉलेज ऑफ द मैथमेटिक्स यूज at school level and college university level. Name them. Did you know maths is used in music and poetry also? Can you tell how? तो स्टूडेंट ये आप खुद से करेंगे। सेकंड, यूज द लेटर इन द वर्ड मैथमेटिशियंस। मेन फोर लेटर्स, फाइव लेटर्स एंड सिक्स और वन मोर लेटर वर्ड्स विद इन अ टाइम लिमिट। फिक्स योर और योर टीचर। तो स्टूडेंट मैथ देम मीट मेड सिक्स केम और थेमेटिक। थर्ड है, sentence can be classified into three types: simple, complex and compound. उसमें फर्स्ट है, a simple sentence is one that has only one subject and one predicate. It has only one finite verb. तो सिंपल सेंटेंस यहाँ पर कौन सा है, कॉम्प्लेक्स है, और कंपाउंड कौन सा है, आंसर है। सिंपल सेंटेंस क्या है, द सर्जन कंट्रोल दिस इंस्ट्रूमेंट एंड द कैमरा फ्रॉम कंसोल। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ पर आपको दिया हुआ है। उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस क्या है, इन दोज डेज हार्ट पेशेंट वेर ट्रीटेड विद sedatives and they usually did not survive. Next is, what did the manuscript contain? Answer, the script consists of theorems, most of them were in fantastic looking. One or two already well known, laid out as though they were original. There were no proofs of any kinds. Everything was written in non-English scripts. There were line after line of symbols. Next is, why would Hardy not enjoy his game? Answer, at the back of Hardy's mind, the Indian manuscript was getting in the way of his complete pleasures in his game. There were wild theorems such as they had never seen before nor imagined. The question worrying him was whether it was fraud or genius. The questions kept nagging him. Hardly had to find out for sure. Next, what did the two English mathematicians realize by midnights? Answer, the two English mathematicians knew for certain that the writer of the manuscript was a man of genius. That was what they could judge at the night. अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सेकंड है, व्हाट वर द टू ड्रॉबैक्स इन रामानुजन्स करियर? Answer, there were defects in this equation and Ramanujan had come on the scene too late in the line of mathematical history. These are the reasons Ramanujan could not make contribution on the same scale at the great Goes and Euler. Next है, what superstition did Ramanujan brothers believe in? तो उसका मैंने आंसर आपको दिया हुआ है, यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, what surprised everyone on what? Answer, Ramanujan arrived in England. Ramanujan, despite the difficulties of breaking the caste law, did not believe much in theological doctrine, but he believed in the benevolence of the God and reached England. The surprise everyone. This surprised everyone. Next thing, what did Hardy have to teach Ramanujan? Answer, Hardy taught Ramanujan some formal mathematician as the Ramanujan had been a scholarship candidate at Winchester. Why does he call an unusual experience? मैंने उसका आंसर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से आप डायरेक्टली लिखेंगे। नेक्स्ट है, कैन यू वर्क ऑफ द सम ऑफ क्यूब्स इन डिफरेंट वेज इन विच इक्वल्स 1729? आंसर, मैंने आपको यहाँ पर आंसर दिया है, जैसे कि टू सन्स ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 1729 each of 10 10 raised to 3 plus 9 raised to 3 and 12 raised to 3 plus 1 raised to 3. Next, name of the famous magicians mentioned in this write-up.
मैंने आपको इस यहाँ पर आंसर दिया लिस्ट ऑफ मैथमेटिशियंस कौन कौन से हैं यहाँ पर आपको सभी लिस्ट है यहाँ से आप डायरेक्टली लिखेंगे 4.4 रामानुजन जो चैप्टर है उसके इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चन हम देख लेते हैं फर्स्ट है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स प्रेटेस टू मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन तो यहाँ पर सभी के क्वेश्चन दिए हुए जैसे कि एंथुजियम लव लव ऑफ फ्रॉड क्लैरिटी एम्पियर उसके बाद टू केम टू टर्म्स विद और लॉर्ड्स कन्वीनियंस B. The following words can be used as nouns as well as verb. आंसर देख लेते हैं हम विजिट उसके बाद नाउन्स क्या है वर्ब क्या है ऑनर में नाउन वर्ब उसके बाद रिपोर्ट में भी नाउन और वर्ब आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली लिखेंगे नेक्स्ट है फोर वॉच वॉच का भी नाउन्स और वर्ब लिया हुआ है जैसे कि आई वॉज टोल्ड टू कीप अ वॉच ऑन माई बेबी ब्रदर्स वर्ब वी मस्ट वॉच वेयर वी गो लिस्ट वी फॉलो फॉर्म्स यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि नाउन क्या है उसके बाद वर्ब सरप्राइज का नाम दिया हुआ है यहाँ पर नाउन और वर्ब मैं चाहूँ तो कर्सर हटा लेता हूँ आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सेकंड है से व्हाई A. Ramanujan's letter board in irritated Harley at first. Answer. Harley could not understand the letter writing by Ramanujan since it was written in Helton English. The script appeared to consist of theorems, most of them wild और fantastics looking. बाकी का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से बी हार्डी इनवाइटेड लिटरवुड फॉर द डिस्कशन आंसर द इंडियन manuscript lacked Hardy. There were wild theorems that he had never seen before, even imagined. He was wondering whether it was fraud of genius. This is why he sent up Littlewood to show the manuscript to him and to discuss with him. See, mother agreed to send Ramanujan to England. यहाँ पर उसका आंसर दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन से हार्डी और रामानुजन कुड नॉट टॉक फ्रीली विद ईच अदर आंसर मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ से आप डायरेक्टली लिखेंगे ये रामानुजन हैड टू बी हॉस्पिटलाइज आंसर रामानुजन बिकेम इल एंड हैड टू बी हॉस्पिटलाइज इन अ हॉस्पिटल एट पुणे ही कॉन्ट्रैक्ट tuberculosis because the climate was too harsh for him. If Ramanujan found the number 1729 was interesting. तो उसका आंसर मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है थर्ड है रीड द टेक्स्ट एंड enlist the achievements and honors of Ramanujan received in England. Answer Ramanujan became a fellow of Trinity within 4 years of his admissions. Second, the Royal Society elected him as fellow at the age of 30, very young age. Third, Trinity also elected him as fellow the same year. नेक्स्ट है वॉइस एक्टिव और पैसिव मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपको यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए ठीक है ए underline the verbs in the following sentence and state whether the sentence are is in active or passive voice ए इंग्लैंड gave Ramanujan great honors तो ये एक्टिव वॉइस का पार्ट बी है a large untidy envelope was decorated with the Indian stamp आंसर ये पैसिव वॉइस थर्ड है द टाइम टेबल वाज नॉट अल्टर्ड ये भी पैसिव वॉइस का एग्जांपल है डी शी सॉ हर सन इज इन बिग हॉल अगर आप चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो दैट्स आंसर है एक्टिव वॉइस ये हार्डी करेक्टेड हिज स्टेटमेंट ये एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है ये रामानुजन वाज brought टू इंग्लैंड ये भी पैसिव वॉइस का एग्जांपल है बी है चेंज द वॉइस इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए हार्डी थॉट रामानुजन आंसर रामानुजन वाज थॉट बाय हार्डी बी ही न्यू नथिंग ऑफ द मॉडर्न फिगर
Answer. Nothing of the modern rigor was known by him. CA. Sheets of paper were found in it by Hardy. Answer. Hardy found sheets of paper in it. D. Hardy was bored by the manuscript. Answer. The manuscript bored Hardy. E. Trinity supported an unorthodox talent. Answer. Unorthodox talent was supported by Trinity. He could not break the ban. Answer. The ban could not be broken by him. AB. Quick number question say identify whether the following are simple, complex or compound sentence. उसमें ए दिया हुआ है when he opened it he found sheets of paper. अगर आज चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए. आंसर है ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के. बी he glanced at a letter. Answer simple sentence. C. Hardy was not only bored but he was also irritated. Answer compound. D. Ramanujan turned out to be poor clerk. Answer simple sentence. E. If Ramanujan had been better educated, he would have been even more wonderful than he was. Answer complex. F. Ramanujan was self-taught. He knew nothing of the modern rigor. Answer simple. 6. Interview question. A brilliant student from your school has won a mathematics quiz at one national level. Frame question to interview him her when the school felicitates him. Her follow the steps given below. तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए यहाँ से आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो स्कूल का बच्चा है जो मैथमेटिक्स क्विज में विन हुआ है. तो इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे मतलब गुड मॉर्निंग यंग मैन यंग लेडी आई एम सो हैप्पी टू बी हियर टुडे ऑन सच एन एस्पियस ओकेशंस वी हैव हैप्पी टू प्रेजेंट टू योर ट्रॉफी Shilpa Rakesh you have made us so proud. You have won the maths quiz in the national level held in Delhi. This is no mean feat. Congratulations to you. तो ये आपको यहाँ पर बाकी का आंसर दिए हुए यहाँ से आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हाउ मेनी प्राइजेस डिड यू गेट बिफोर दिस अचीवमेंट. उसके बाद डिड यू रिसीव एनी इंटर जोनल प्राइज और इंटर स्टेट प्राइज. नेक्स्ट क्वेश्चन से हाउ मेनी कॉम्पिटिशन डिड यू पार्टिसिपेट इन द डिफरेंट स्टैंडर्ड. नेक्स्ट है वेयर यू अवेयर ऑफ योर स्किल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. व्हेन डिड यू बिकम अवेयर ऑफ योर स्किल. आफ्टर स्कूल व्हाट आर योर फ्यूचर्स प्लान. तो बाकी के क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर दिए हुए यहाँ से आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं. 7th है समरी. रीड द फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स ऑन पेज 92. तो पैराग्राफ रीड करके आपको समरी लिखनी है. मैंने आपको यहाँ पर समरी दी हुई जैसे कि in 1930 Hardy found an envelope with some sheets written in non-English scripts filled with symbols. Hardy read the letter written in halting English. The script consisted of theorems, most of them appearing wild and fantastic. Hardy decided to go and play tennis, but the manuscript and the theorems kept on entering his mind. बाकी का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. इयत्ता 8वीच्या मराठी सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा.